सेल्स एंड मार्केटिंग को बहुत लास्ट प्रेफरेंस मिले लोक माने कोन कहबे सर टारगेट ओरिएंटेड जॉब सर टारगेट इज नॉट अ प्रॉब्लम द प्रेशर व्हिच कम्स इन सेल्स इज अ प्रॉब्लम फॉर देम आप जदि भलो सेल्समैन हेबाकू चाहउछंती नॉट इवन ओनली सेल्समैन बिजनेसमैन हेबाकू भी जदि चाहउछंती एंटरप्रेन्योर स्किल्स जदि आपन को आनु चाहउछंती यू नीड टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द पीपल वेयर द डिमांड एक्चुअली इज बी इंजीनियरिंग पिला आजिकली तांकर ओनली एक्सपेक्टेशन टू डू अ व्हाइट कॉलर जॉब जोटा कि से माने भाबंती मो एमबीए कॉली माने अल्टीमेटली मते मिले जिवो मो आई विल गो विथ दैट लैपटॉप बैग विथ अ बिग कार मते गोटे के डोर खोली देबो मो पळेबी मोर गोटे केबिन थिबो एसी लागथो खाली लैपटॉप खोलीबी पियर नास्तो पानी दोथो से ड्रीम को पहुंचीबा पे आपन को जो इनिशियल स्टेज रे काम करियो पड़िबो लोक सेटा बुझी पारंतिनी दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट Namaskar, welcome to Udaan Academy Podcast by Trupti, where we talk about confidence, communication and limitless possibilities. We do empower the youth and women of Odisha to dream big and to build real careers of their choice and live their life in their own terms. Engineering और MBA पढ़िला परे पिलांको सेल्स जॉब ता एक्सेप्ट करिया को बहुत डिफिकल्ट हुए ना पिलांको माइंड रे आसे ना मु तो इंजीनियरिंग करछि कोन सेल्स रे चाकरी करिया पई मु एमबीए डिग्री धरछि कोन सेल्स रे चाकरी करिया पई आसंतु आज कथा बा एमिति जने पर्सनालिटी जे कि निजे इंजीनियरिंग पढिचंती एमबीए करचंती तापर सेल्स रो करियर आरंभ करिके आज का डेट रे लीडिंग द एंटायर कंट्री एंड absolutely associated with a multinational company. Without delay, let's welcome Mr. Sivashish Nanda sir. Sir, namaskar. Welcome to the show. नमस्कार मैम थैंक यू सो मच केमती अछंती मु बहुत बढ़िया अछि आउ बहुत बहुत धन्यवाद कि आपण माने मते इनवाइट कले ए प्लेटफॉर्म रे आपण को व्यूअर्स मन को सहित मु आज इंटरैक्ट करि परिबी पॉडकास्ट थ्रू सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर यू आपण इंजीनियरिंग करचंती एमबीए भी करचंती यस मैम बट इफ आई टॉक अबाउट द 21st century students who are into engineering or management they are not at all willing to take or choose sales as a career but आपण सही इंजीनियरिंग और एमबीए करके सेल्स टा को विथ पैशन करके आपण आज गोटे कंट्री को लीड करचंती गोटे मल्टीनेशनल रे सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड और हाउ वुड यू लाइक टू एड्रेस दिस initial stage रे जेतेले मु गुटे ट्रेनर थिली I used to visit many school and colleges I used to interact with the students सेतेले मु गुटे माइंड रे परसेप्शन देखे whenever you ask people the students कि अपन सेल्स लाइन रे जीवा को चाहिबे कि इवन कि एमबीए रे भी अपन देखो तो एते गुडा स्ट्रीम अछि बट सेल्स एंड मार्केटिंग को बहुत लास्ट प्रेफरेंस मिले लोक माने कोन कहबे सर टारगेट ओरिएंटेड जॉब सर मते तो लागे टारगेट जोड आपण कोचन सेटा तो ठीक बट पिलांक मन रे कोट ना कोठी रहे कि माने सेल्स प्रोफेशन विल डिग्रेड देयर पर्सनालिटी टू सम एक्सटेंट दे डोंट फील कंफर्टेबल टू से समबडी के आई एम इनटू सेल्स राइट वेरी गुड यस तांको से जिंसो लागे बट एक्चुअली रे जदी आपण देखिबे दिस इज अ मिथ now तांको काहे के लागे माने इज इट अ कंडीशनिंग ऑफ द सोसाइटी और यस वेरी ट्रू दिस इज अ कंडीशनिंग ऑफ द सोसाइटी सेल्स माने बहुत लोक भाबंती जो माने घर टू घर जाई कि आपण बिक्री करिवे कोनसी सामान को किबा फील्ड रे जाई कि आपण को लोक मान को प्रेशराइज करबा को पड़िबो कोनसी जिंसो किनिबा पई लोक सेल्स माने सेटा भाबंती बट द वर्जन और द डेफिनेशन ऑफ सेल्स हैज hugely changed it's vast actually right पर प्रथमे तो मु आपन को कहबी कि लोक माने ए जो स्टूडेंट्स माने थांती एते रिलेक्टेंट कोन पय वंती सेल्स पय बोली करी मु जेते बेले जहा सहित कथा हेली पचारली मु गुटे जिंस देखे सबे कोनती सर टारगेट ओरिएंटेड जॉब हम द्वारा हे परिबनी टारगेट इज नॉट अ प्रॉब्लम द प्रेशर व्हिच कम्स इन सेल्स इज अ प्रॉब्लम फॉर देम सर ता माने कोन आउ को जॉब रे प्रेशर नहीं प्रेशर तो सबुथरे अछि डेफिनेटली देखो तो गुटे जिंस जदी हमें वेट करबा जदी हमें ओजन करबा गुटे प्रोफेशन को गुटे कंपनी रे हमें गुटे बहुत बढ़िया प्रोडक्ट तैयारी कला यू हैव एक्सीलेंट प्रोडक्ट किंतु से प्रोडक्ट जे पर्यंत लोक को आपण बिक्री करि पारिबेनी जदी लोक ता पय पैसा देबे नाही आपण को ताले से कंपनी भलो प्रोडक्ट थाई कि भी किछि करि पारिबो कि से रेवेन्यू जनरेट करि पारिबो कि बस सर किछिटा तो प्रीमियम प्रोडक्ट अछि ना जोटा बिना सेल्स रे भी तांकरो रेवेन्यू आसी जाउछि मे बी ऑटो ड्रिवन और यू आर द राइट पर्सन मोर जानिबार तो मु कहबी कि दुनिया रे अमृत भी जदी आपण सेल करि पारु नांती तारो वैल्यू क्रिएशन करि पारु नांती सामना वाला जदी जानिनी कि एटा मोर कोन लाभ हबो से ता पय पेमेंट करिवो नाही ओके मु आपन एग्जांपल दउ मु बहुत थर मोर स्टूडेंट्स मान को भी कहे समुद्र मंथन चलितला भावंतु एठु देवता और सेठु असुर टाणुचंदी अमृत बाहरला आ सामना रे जे
से माने जे पाइबा पे जाउचंदी से होचंदी क्लास 2 रो स्टूडेंट्स माने जो माने अमृतर डेफिनेशन ही जान नांती अमृत कोन तांको पे जानि नै ओके तले सेमान को पाकर 1000 टका थिले भी से माने सेटा को नै कि नेबे की किंतु सेही समुद्र मंथन रे टॉय गुटे भारिबो खेळना गुटे भारिबो एबे भाबंतु से क्लास 2 रो स्टूडेंट ता पाकर जदी पैसा अछि से खेळना किनिबो ना अमृत किनिबो अनडाउटेडली खेळना किनिबो सो ही थिंक्स दैट ए जिंसटा मोर एक्सपीरियंस को बेटर करिवो बोली Okay. So this is what is an मतलब हमको एटा बुझिया कथा whatever your product is excellent product हे थाउ डिमांड रो बहुत तारो माने डिमांडेड प्रोडक्ट थाउ किंतु जदी कस्टमर रो तारो बेनिफिट नहीं वैल्यू नहीं then it will not sell सर तले एटा को हमें कोन कहबा माने whether it is a myth or gap in understanding or social conditioning or माने केमती एटा को हम एड्रेस करिवे सो दैट ए जो टेक्निकल और मैनेजमेंट पिला सेल्स टा को होल हार्टेडली एक्सेप्ट करिवे रादर कीपिंग इट एज अ सेकंड ऑप्शन और नॉट इवन अ ऑप्शन इन देयर करियर सी समहाउ आपण जो भी लाइन को जानतु आज आपण बैंकिंग सेक्टर को जानतु आपण आज टीचिंग प्रोफेशन रे जानतु प्रोफेसर होंतु किछि भी होंतु सेल्स विल ऑलवेज हैव एन इंपैक्ट इन योर करियर डायरेक्टली or indirectly so how directly how indirectly how see even I will tell you something sales is not about only selling something okay it is about convincing people it is about making them realize what is the value you the thing which you are approaching towards them जो जिंसो को अपन ताको अप्रोच करचंती देखौचंती अवेयर करबा जाउचंती तांको लाइफ रे से जिंसो रो वैल्यू केते से जिंसो को तांको गाइड करबा तांको बतेबा सेटा होची सेल्स सर टिके इंटरप्ट करचे एठी बिकॉज़ गोटे इमीडिएट क्वेश्चन आसुचे अपन जो कहले कि माने it's about convincing or letting the front person know how important the thing is for you तो एठी कोन होइना जे रिसीविंग एंड रचे तांको पाखरे बहुत सारा कंपटीशन थाए ट्रू तो सेटा को माने मे बी जो माने सेल्स रे थांदे हैंडल करि परंतिनी सो माने सेठी अप्रोच टा केमिति रहिले माने जणे लोक को केमिति इधर मु कहि परनी टेक्निकली ताको बायस करि हबो कि निजो रो प्रोडक्ट एड को कन्वर्ट करि हबो केमिति से कंपटीशन माने एक्जिस्टिंग जिंस भितरे गोटे नुवा जिंस रो चाम टा को केमिति जणे कंपेयर करि कि प्रोजेक्ट करि परिबो सी सेल्स जदी आपण एई क्वेश्चन मते पछारिबे मु स्ट्रेटली कहिबी इट इज अबाउट building the connections and understanding the psychology of people tankor need को आपण जदी बुझी परिबे then you will be a very good salesman सर एठी आपण जो कहिले मते गोटे इमीडिएट गोटे क्वेश्चन को आसुची लेट्स से मु गोटे सर्जिकल प्रोडक्ट को डील करूची मु गोटे डॉक्टर को अप्रोच करची मो प्रोडक्ट पाइका मु अप्रोच करबा आगु एक्जिस्टिंग कंपनी आउरी अप्रोच करिसंती नॉट ओनली अप्रोच द डॉक्टर इज ऑलरेडी इनटू दोस प्रोडक्ट्स तांका कंपनी रा प्रोडक्ट क्वालिटी एते नाही किंतु अदर बेनिफिट्स बहुत मिलुची सो डॉक्टर्स माने सेपरेट डाइवर्टेड अछनी मु गोटे प्रीमियम प्रोडक्ट नै कि जाउची जहार प्राइस अधिक किंतु अदर बेनिफिट्स नाही तो डॉक्टर सेठी डिमांड करूची मते एटी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलुची मु काहे कि मते क्वालिटेटिव प्रोडक्ट पेशेंट देयर लगेले मोर कोन बेनिफिट हबो राइट ओके नाउ एई जगह आपन को बुझिया को पड़िबो सेल्स अलगा अलगा पॉइंट टारगेट कस्टमर्स अलगा अलगा थांती जो एग्जांपल आपन देले से जगह रे बीइंग एन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कोंतु कि किछि भी कोंतु से जगह रे तार कस्टमर के हला तार कस्टमर एंड यूजर नो इट इज द डॉक्टर यस he is selling to the doctor तो डॉक्टर नीड जदी सफाइस होची से जो जिंसो चाहूची जदी तार नीड मीट हला ताले से आपन को प्रोडक्ट रखिबो व्हाटएवर इट माइट बी हेई पारे तार पर्सनल बेनिफिट हो या फिर तार निजर कंसल्टेशन रो डिमांड बढ़िबा पई जते बेले पेशेंट्स मन को रिजल्ट मिलिबो ऑटोमेटिकली तार डिमांड बढ़िबो मो पाखरे आउ बिजनेस ग्रोथ होबो किबा मोर ना बढ़िबो जदी से जिंसो चाहूची जदी तार नीड सेटा ताले से डेफिनेटली प्रोडक्ट को नेबो बट सर तार नीड जदी पर्सनल एस्पेक्ट रो रहूची ताले त आपन को सेही नीड को फुलफिल करबा पड़िबो बट सेही नीड त कंपनी दोनी ना तमन जने सेल्स पर्सन कोन निजो इट मींस you are targeting the wrong doctors everybody cannot be your customer आपन को that is what I told कि आपण जदी भलो सेल्समैन हेबाको चाहउचंती नॉट इवन ओनली सेल्समैन बिजनेसमैन हेबाको भी जदी चाहउचंती एंटरप्रेन्योर स्किल्स जदी आपण को आनो चाहउचंती यू नीड टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द पीपल वेयर द डिमांड एक्चुअली इज एंड व्हाट एक्जेक्टली दे आर आस्किंग फॉर जदी आपण सेटा को फुलफिल करि परनांती देन ही इज नॉट योर कस्टमर बट सर एटा गोटे गैप रोच ना जनकर पर्सनल नीड टा को जणे प्रोफेशनल केमती फुलफिल कर परिबो ग्रीड रो तो कोनसी सीमा नाही यस ट्रू बट हां एबे जदी आपण देखिबे दिस इज अ बिट डिफरेंट व्हाट वी आर टॉकिंग माने जो टॉपिक जदी सेल्स रामे कथा कहबा ताटो टिके अलगा बिकॉज़ आजी जो रेवेन्यू जनरेशन करिवारो ग्रीड अछि पैसा कमेबारो ग्रीड अछि लोक मानकर सेटा
गोटे अलग दिशा को पड़ी जाय से इट इज नॉट अबाउट व्हाट यू कैन से कि गोटे एंड यूजर रो केते फायदा हबो कि कोन हबो से निजर बेनिफिट्स मान को देखियो चाहचंती एंड देयरफॉर देयर आर माफियास अपन जदी मेडिकल इंडस्ट्री देखंतु देयर आर माफियास इन एजुकेशनल इंडस्ट्री देखंतु हां एजुकेशन इंडस्ट्री रे अछंती इनफैक्ट एवरी इंडस्ट्री रे मोर और लेस अछंती एमती लोक यस सो दिस इज अ पॉइंट बट ऑलवेज आई विल से कि जदि अपन गोटे भलो सेल्समैन बागु चाहचंती यू नीड टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द पीपल द साइकोलॉजी ऑफ द पीपल नाउ यू सी आम आख पाखरे जत्ते भी जिंस हमें देखि पारछु ए सब जिंस कहार ना कहार किछि ना किछि गोटे समय रो नीड थिला निहाती गोटे मोबाइल फोन हो चौकी हो किंबा ये डेकोरेशन आइटम्स हो एवरीबॉडी वांटेड इट एंड समबडी क्रिएटेड इट इवन सर दिस पॉडकास्ट आल्सो या ट्रू वेरी ट्रू पॉडकास्ट हम जेतला हम कॉलेज पढुतला हम पॉडकास्ट केते देखि देला यस सो पीपल आर एन्जॉयिंग नाउ शॉर्ट टाइम रे देखिबा सो शॉर्ट टाइम इनफैक्ट माने आजकल यूथ डोंट हैव द पेशेंस टू रीड अ बुक सो व्हाई डू दे प्रेफर पॉडकास्ट इज दे कैन मैनेज टाइम व्हाइल ट्रैवलिंग और डूइंग हाउसहोल्ड चोर्स आल्सो दे कैन लिसन टू द पॉडकास्ट Absolutely. Simultaneously, they're doing their own work, and meanwhile, they're also learning something out of the podcast. Correct. That's why it's on trend or demand. So coming back to the point, मु आपन को जदी आपन जो प्रथम मते क्वेश्चन पचारले मु सेही कहबी कि लोक जो स्टूडेंट्स मानकर परसेप्शन अछि ना प्रेशर हमको बहुत प्रेशर आसीबो सेटा को हम हैंडल करि पारिबो नै सो दे वांट टू गेट इनटू सम करियर और जॉब जोटा तांको कंफर्टेबल लागिबो so therefore people don't like to pursue sales. Okay. सर आ गोटे जिनस भी मु सुनिछि जानिछि एक्सपीरियंस भी करिछि कि सेल्स टा को लोक जत्ते भी अंडरमाइन करले भी लोक कोठी ना कोठी जानिछंती कि सेल्स ही तांको अपॉर्चुनिटी दिए तांकर स्किल डेवलपमेंट कॉन्फिडेंस रे रेजिलियंसी हैला कन्विंसिंग पावर हैला लीडरशिप एबिलिटी हैला तो आपनकर तो गोटे ह्यूज एक्सपीरियंस अछि इनफैक्ट आपन पूरा एंटायर कंट्री को लीड करूछंती आपनका प्रोडक्ट नै कि आपनकर किछि गोटे एक्सपीरियंस शेयर करबे कि जोथरे आपण सिखितिले एम्ति किछि जिंस जोटा कि आपनको इंजीनियरिंग और एमबीए क्लासरूम रे सिखै नथिला डेफिनेटली यस बुक्स बहुत जिंस हमको सिखै परिबो नाही आउ जोटा मु मोर पर्सनल एक्सपीरियंस रु सिखिछि फील्ड रे सेल्स पर्टिकुलरली ए बैग माने ए करियर रे सेटा हला लोक मान को सहित आपण केमिति रिलेशनशिप बिल्डिंग करंती और केमिति आपण पीपल डीलिंग स्किल नाउ मुझे आपण देखंतु बहुत सारा लोक माने कहउचंती जे बे जमाना आसी गलाने एआई रो लोक मानकर जॉब्स खाइ दबो एटा कर दबो सेटा कर दबो सर इवन एमबीए रे मु एबे भी जीडी कंडक्ट करले माने जीडी टा स्टार्ट हुए से तो भी एआई रिप्लेस सो पीपल सी इट एज अ थ्रेट बट आपण देखंतु को सेक्टर को गुटे जगह जोटा एआई जेते भी डेवलप हे जाऊ किंतु से जगह रे पहुंची परिबोनी एंड दैट इज अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन इमोशन करेक्ट सामना वाला रो एक्सप्रेशन को देखि की बॉडी लैंग्वेज को देखि की तारो कथा वार्ता को हमें जानि की हमें जानि जाऊ जे ताको को जिंस रो हमको परस्यू करबा कथा सेल्स रे बहुत बड़ जिंस एंड मु मोर करियर रे जतले मु माने एते टाइम स्पेंड करली मु बुझी पाली जे लोक मानकर साइकोलॉजी को अपन बहुत बढ़िया अंडरस्टैंड करि परिबे अपन जदी एई पर्टिकुलर लाइन रो chanti exactly and this will help you in your personal life also true not only professional but also your relationship with your family with your wife with your children correct everywhere it is going to improve so that thing has never been taught us in the books or the colleges what I have learned in the field sir tamane kon skill ta develop kore pe everyone should go through sales job I will definitely tell everybody I'll tell definitely acha at least 2 to 3 years bilkul ma'am bilkul the beginning of their career mane you won't understand ebe to apan jani paribeni but jodi apan 2 वर्ष से हार्डकोर सेल्स लाइन को जाउ चंदी you will have that super power to understand people to you will know how to build the trust तांकर ट्रस्ट को केमिति जीति पारिबो तांकर कथा को केमिति बुझी पारिबो आ बहुत लोक भाबंती कि ए सब जो माने सेल्स रो काम होची एटा केवल खाली एक्सट्रोवर्ट पीपल माने जो माने बहुत बढ़िया कहि पारंती लोक मन से मिसी पारंती से माने कहि परिबे बट दिस इज अ मिथ आई विल टेल यू इट इज नॉट लाइक दैट जेते आपण भलो लिसनर होचंती जेते आपण काम पर्सनालिटी बिकॉज़ मोर यू लिसन मोर यू अंडरस्टैंड द नीड एंड मोर द मतलब मोर यू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द पीपल अपन सेते ही भलो ताको वैल्यू क्रिएट कर सर देन व्हाट इफ द पर्सन इज नॉट अलाउइंग यू टू लिसन और स्पीक yes you come across with many people like that in sales बहुत तो एमिति लोक so when you get that opportunity then only you will project yourself or you will showcase yourself no जदी सामना लोक सेति के समय दबा को ही reluctant आरंभ रो ही मना कर देबे तो माने सेही जगह रे केमती माने how to manage that situation से जगह रे
देखंतु जदि आमे कथा कहबा आमे सेल्स फनेलिंग रो कथा कहबा ताहले डायरेक्ट सेल्स डायरेक्ट पिच भी सब जगह काम करेनी ओके फर्स्ट होची लोक मानकर इंटरेस्ट को ग्रैब करबा सर सेटा केमती आपण पूरा माने रूट लेवल रो कहंतो कि प्रथमे केमती से साइकोलॉजी टा को बुझिबा इवन सर सपोज माने मु गोटा am a सेल्स पर्सन एंड आई एम गोइंग टू अप्रोच यू फॉर सर्टेन थिंग्स एंड दी तीन थरो मु आपण पाखु गलेनी आपण कथा हबा आग्रो ही मते देखि कि मोर गुड मॉर्निंग सुनी के ही यू कम टुमारो और आई एम बिजी नाउ तो सेठी कोन हुए ना माने मु ऑब्वियसली लूज माय कॉन्फिडेंस नो मु दी तीन थरो अप्रोच करूची ता आपण समय ही दो ना तापर कोन ऑटोमेटिकली आई लूज इंटरेस्ट टू मीट द पर्सन राइट तो सेठी पुनी सेल्स भी तो डाउन हबो ना सेठी हेवर्ड रो गुटे हेवर्ड यूनिवर्सिटी रो गुटे स्टडी रे जणा पडितला दैट 67% ऑफ योर कस्टमर से माने फर्स्ट अप्रोच रे हां कहंती ही नाही ओके सो हाउ मेनी अप्रोच डज इट टेक टू कन्विंस अ पीपल एटलीस्ट 4 ओके ता माने मु कोन कहबा को चाहू छी गुटे जदि सेल्स प्रोफेशनल को देखिबे कि गुटे बिजनेसमैन को देखिबे से गोटे भल व्यक्ता हे न थाउ मे बी कन्विंसिंग पावर ता पाकर न थाउ किछि भी न थाउ किंतु गुटे स्किल ता पाकर निहाती थिबा कथा एंड दैट इज फॉलो अप करबा स्किल नाउ यू गो टू एनी सेक्टर हां ट्रू सर एटा मु देखि छी मोर गोटे सांगोटा माने से ना इंजीनियरिंग करछि ना एमबीए करछि एज अ प्लेन ग्रेजुएट मे बी पर जदी डिस्टेंस डिस्टेंस को एमबीए करथे मु जानि नी बट आज का डेट रे माने से पूरा गोटे टॉप मोस्ट पोजीशन रे अछि सेल्स रे इनफैक्ट एपी रिसेंटली मु सुनिथिले ता कंपनी ताको बिजनेस क्लास रे यूएस बुलिया पय देइतिला सी यू कैन सी दैट एंड ही डजंट हैव दैट लुक आल्सो जोटा गोटे लुक भी तो गोटे इंपैक्ट पके गोटे प्रोफेशनल लुक सेटा भी ता पाखरे नाही माने गोटे पान खिया माने टोपी पिंधा लोक बट कॉर्पोरेट रे चांस पाई जाई छी बट तार गोटे स्किल अछि जोटा आपण कहिले फॉलो अप करिवार यस मैम से रिगरस फॉलो अप करे एंड ही डजंट टेक एनीथिंग पर्सनली मु तो मोर पूरा एंटायर करियर रे देखि छी दोज हु आर द सेल्स लीडर्स मु ताको सेल्स पीपल कहबे नि सेल्स लीडर्स बिकॉज़ दे हैव क्रिएटेड मेनी अदर सेल्स पीपल इन देयर टीम सो से सेल्स लीडर्स मान करना मैडम गुटे यूनिक सेल्स माने स्किल थाए एंड दैट इज दे आर वेरी स्ट्रांग विथ फॉलो अप से माने फॉलो अप करिवे फॉलो अप केवल खाली काको प्रेशराइज करबा नुह कि किनो मोटू नियम तुमे अपॉइंटमेंट दियो नुह इट इज अबाउट प्रोस्पेक्टिंग ता सहित मिसिबा ओके ता सहित रिलेशनशिप बिल्ड करबा इन दैट प्रोसेस यू कम टू अ पॉइंट व्हेन ही नीड्स इट एंड यू pitch it okay it means माने मु जदी सिंपलीफाई करबे आपण टेक्निकली कहउचंती माने गोटे कांस्टेंट टच रे हम एतल गोटे लोक सहित रहिबा ताले तारो माने गोटे ना गोटे तो पॉइंट आसीबो जोठी कि जानि परिबा हमें कि तार एग्जैक्ट नीड टा कोठी हम कैप्चर कर परिबा सेटू मु आपण गोटे यार गोटे बहुत छोट उदाहरण दे देबी आई ऑफन टेल टू माय इन माय ट्रेनिंग सेशन गोटे दीटा डॉक्टर थिले हस्बैंड एंड वाइफ सो दे डिसाइडेड दैट हमरो गोटे पुराना गाड़ी टे अछि बहुत टाइम ही गलानी रिटायरमेंट रो टाइम ही गलानी सो वी विल डिस्पोज इट ऑफ एंड विल बाय इट बट वी स्टिल हैव टाइम वी आर नॉट इन अ हरी टू बाय इट वी विल टेक टाइम एंड वी विल बाय इट बट अपन जानि चंदी वाइफ्स मान कर टिके एक्साइटमेंट लेवल अधिक आई जाए सो वाइफ कहबा आरंभ कले कि नै हम जिबा देखिबा जल्दी किनिबा बोली करी तो हस्बैंड को कहले अच्छा ठीक अछि से प्रेशर रे दिने से गोटे संडे दिन अपॉइंटमेंट नि जाइतिले गोटे टेस्ट ड्राइव राइट सो से कहले आज आमे टेस्ट ड्राइव करबा पई जिबा आ किंतु मने रखि दो टेस्ट ड्राइव करबा पई जिबा किनिबा किछि नै ओके हां से आगरु ताको कंफर्म कर देले दे डोंट बी ओवर एक्साइटेड कि आज ही किनिबार अछि बोल करी सो से माने कहले ओके ठीक अछि चलो कम से कम तुमे से पॉइंट को तो आसलो कि टेस्ट ड्राइव करबा पई जिबा बोल करी तो गले से माने ओके तो जेते बेला सेठी पहुंचिले से गोटे बहुत यंग गोटे सेल्समैन टे थिला तारो बहुत यंग पिलाटे वेरी यंग फेलो से देखु देखु से सर को कहला सर नमस्कार म आपन को देखा करके बहुत भल लागिला से मिश्रा सर हां आ मु माने आपन खराब भाबिबेनी मु मोर कस्टमर्स मान को विषय रे टिके जानिबा पे चेष्टा करे ताकर बैकग्राउंड कोन केमति बोलकरी आपन आसीबा पूर्वरु म आपन को लिंक्डइन प्रोफाइल देखितिली सर आ सेटू मते जाना पड़ला जे आपन एई माने से एरिया रो एई फेमस हॉस्पिटल रे गोटे डायबिटोलॉजिस्ट अछंती बोली सो डायबिटीज ऊपर आपण एते काम करिसंती एते लोक मान को करिसंती हेल्प माने आई वाज अमेज्ड सर मु माने आपण को देखा करबा में आज एते उत्सुक थिली आ मोर निजर बापा को एते वर्ष रो डायबिटीज अछि सर म आपण को भाबुतली पचारिबे बोली कि केमिति कोन करबी प्लीज टिप्स नेबा को चाहू बोली सो व्हाट ही डिड इज तांको पोलाइटली कैबिन भीतर को डाकेला कहला सर प्लीज बसंतु चा फा देला आ तांको 20 मिनिट्स यू विल बी सरप्राइज्ड 20 मिनिट्स कहा विषय कथा हिचंती से माने ओनली डायबिटीज ऊपर ओके and doctors are not even into test drive or any cars nothing no nothing so they were talking about diabetes रे कोन खाइबा कथा केमिति हुए सार भी बहुत तांकर इंटरेस्ट सहित he is telling about all those things
आफ्टर दैट ही केम आउट आउ से कहले माने से सेल्समैन टा कहला कि सर बहुत बहुत धन्यवाद मस्त लागला सर मते बहुत आपन सब देखा करके एंड आई अंडरस्टूड सो मच डिटेल्स अबाउट डायबिटीज आई एम श्योर कि मु बापा को मु आपन को द्वारा ई नॉलेज द्वारा हेल्प करि परिबी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपन देखु थांतु एटी गाड़ी अछि कोटा किनिबे बोली देखंतु कोटा पसंद मु जस्ट टेक्नीशियन को नेके आछि से आपन को एक्सप्लेन करिवो बोली ओके एंड यू वोंट बिलीव आफ्टर दैट व्हेन दे वर स्ट्रोलिंग अराउंड देयर वर डिफरेंट मॉडल्स केप्ट तो जितले जाउथले देखि कि सर कहउचंदी कि सिमी माने तांको वाइफ जछंदी सिमी मते लागुची गाड़ी किनी नै जिबा कथा आउ एठु नै जिबा so he has not even spoken about the car कोन तांको दरकार कोटा माने से सब जिंस जानि छी but through that conversation he could win the heart of that person absolutely so it is not when you are describing about your product करेक्ट बट सर एटी टिक इंटरप्ट करूची एटी किछि माने जॉब एस्पिरेंट्स या जो माने सेल्स रो अछंदे तांको लागे कि मु काहे कि गोटे लोकर बैकग्राउंड वेरीफाई करिबे मोर कोन दरकार मु ता विषय काहे कि करिबे मोर तो जे काम होची गाड़ी बेकिबा मु काहे कि सियाडे जिबी सीतार नेले नो नले मु आउडे कस्टमर देखिबे तो ए पर्सपेक्टिव ता केमती माने मु सदा बेले एटा भी कहबी नाही कि अपन ताकर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करंतु बट यू डू सम होमवर्क टू नो दैट पर्सन तांकर नीड कोन तांकर इंटरेस्ट कोन को जिंस तांको कन्विंसिंग लागिबो को जिंस तांको वैल्यू क्रिएशन लागिबो जेते भी बड़ बिजनेसमैन टे हिताउ से गुटे कमर्शियल व्हीकल किनिबा पे आछि ताको आपण मर्सिडीज बिक्रीबा पे चेष्टा करिवे से किनिबो नाही तापर पैसा अछि बट ही हैज नॉट कम विथ दैट ऑब्जेक्टिव टू बाय अ ऑडी और मर्सिडीज ही हैज कम टू बाय अ कमर्शियल व्हीकल सो यू नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर हैंड से कहबा पूर्वरु कि तार नीड कोन if you are not able to do that at least spend some time to listen to that person से कोन कहबा को चाहउचंती आमे बहुत थरो सेल्स रे कोन करू मु जो जिंस को पुश करे को चाहउची बिक्री करे चाहउची मु से जिंस को प्रेजेंट करे पे चेष्टा करे so ultimately it is not going to sell okay yes so you need to understand the person's view आउ आपन को डेफिनेटली टाइम स्पेंड करिबा कथा if it is possible to do beforehand जाको हमें प्रोस्पेक्टिंग को तले आपन तांकर डेटा को सर्च करंतु नाउ माने वर्ल्ड तो एमिति हेगलानी जे गोटे व्यक्ति विषय आपन को जे जानिबा जाउचंदी तांकर सोशल मीडिया प्रोफाइल को दियंतो अपन जानिबे राइट सर एठी मु गोटे कथा कहबी माने मु जोटा एक्सपीरियंस करछि मोर करियर रे सो फार माने ऑफ कोर्स आई एम नॉट इनटू सेल्स आई एम प्योरली इनटू एकेडमिक्स बट academics रे मु देखि जे as because I listen to people with interest एमति नो के टाइम पास पाएगा with interest I listen to people in fact I enjoy those conversation आउ जदी possible काहा को गोटे solution देई परिली या जदी possible काहा को हेल्प करि देली because by default I am a person of that kind तो सेटा कोन करे ना मोर बहुत सारा काम रो बर्डन को कमे दे सी माने ऑटो ड्रिवन मोड को चली जाय yes exactly डिफॉल्ट माने मु जोटा आपण कहिला परे मु कनेक्ट करि परिली yes ma'am कि because of that मोर बहुत सारा जिंस ऑटो ड्रिवन मोड को पड़ी जाय छी आपण देखंतु यू आर नॉट फ्रॉम अ हार्डकोर सेल्स बैकग्राउंड यू आर इन अ टीचिंग प्रोफेशन बट स्टिल दैट वर्क्स यस इट डज मु माने बहुत सारा माने कोऑर्डिनेशन मु फिजिकली प्रेजेंट नथिले भी हे जाय पर as because I have maintained that rapport with people of course not by giving cash or any gifts it's all about trying to understand the emotion of the people and if possible to help them out in some way or the other correct right yes so मोर सेटा unknowingly हे छी किंतु मु कनेक्ट करि परली आपण कहिला परे सर इफ यू आर टॉकिंग टू अ रूम filled with fresh engineering and management graduates what would be one tip for them to change or to flip their perspective towards sale okay जदी स्टूडेंट्स मानकर कथा कहबा fresh engineering and management students okay the room is filled well students life रे तो बहुत किछि बुझी हुए नी only you think about how सिप्रा उडीबा स्टेज रे माने जानती माने मु केते ग्रो करबी को पोजीशन को पहुंचबी ऑलवेज मु एबे भी कहूची पिला माने मते देखुथिबे माने एमबीए इंजीनियरिंग पिला आजिकली तांकर ओनली एक्सपेक्टेशन टू डू अ व्हाइट कॉलर जॉब जोटा कि से माने भाबंती मु एमबीए कॉली माने अल्टीमेटली मते मिले जिवो मु आई विल गो विथ दैट लैपटॉप बैग विथ अ बिग कार मते गोटे के डोर खोली दबो मु पळेबी मोर गोटे केबिन थिबो एसी लागथो खाली लैपटॉप खोलीबी पियोन आस्थो पानी दोथो कॉफी दोथो चा दोथो लोक आस्थो मु एमती टिप टिप करी कथा माने कंफर्ट जोन रे पूरा एकदम बढ़िया सेटा ही तांकर ड्रीम आ से मानको इंजीनियरिंग एमबीए पछरे मोटो ही सेटा से ड्रीम को पहुंचवा
बुझिबा पे आपन को जो इनिशियल स्टेज रे काम करियो पड़िबो लोक सेटा बुझि पारंतिनी they are not ready to accept. See even Sundar Pichai he is the CEO of the Google even से भी एमिति डायरेक्टली पहुंची नांदी Correct. he must have done some struggle he must have done some माने ग्राउंड वर्क करचंदी ताले जे कि से जगह को पहुंची पाचंदी so that thing बुझिबा को पड़िबो आपन को कि इनिशियल स्टेज रे समस्तन को पई life will be like that only you need to learn your basics first जदि मते स्टूडेंट्स मानको कहबा को माने पड़िबो माने चाहिए मु I will tell about them two things first adaptability जदि आपण सिचुएशन रे अडैप्ट करि पारु नांती ताहले आपण कोनोसी प्रोफेशन रे सर्वाइव करि पारिबो करेक्ट हां इट्स वेरी ट्रू things are changing very fast right so adaptability has to be there most of the generations young generation जो माने अछंती बहुत लोक माने कंफर्ट जोन रे रह जानती और सेटा होची तांको पय सबुत्रु बड़ शत्रु सर सेटा से माने जानंती फिर भी रहंती because maybe हे पारे मु माने ठीक से कहि तो परिबि नै बट तांकर अपब्रिंगिंग मे बी तांको पेरेंट्स तांको एते कंफर्ट देई चंदी which is a good thing सेटा लागे which is a good thing I will not say it is a bad thing जरूरत से ज्यादा कंफर्ट जोन देले कोन गोटे तपरे सर देखंतु गोटे एज पर ना पिला को चेंज करि हुए तो बापा मां का हाथ रे से कंट्रोल ता थाए गोटे सर्टेन एज जाय से माने किछटा क्वालिटीज और नेचर को इनकलकेट करि परिबे एंड वंस दैट एज इज ओवर आ बापा मां कोन स्वामी स्त्री कोन मास्टर टीचर जे चाहे भी किछि हे परिबे तो मते लागे गैप ता सेट ही रहि जाय जोटा कि इंपैक्ट प्रोफेशन रे भी आसी जाय yes सेटा निहाते तारो इंपैक्ट थाए but that is also a good thing that we are providing so many comforts to our children amar to psychology eta hi ki ame tanko सब किछ दे परिबा but somewhere से जिंस असुविधा भी क्रिएट करछि so adaptability is one factor I will tell to all students secondly मो तांको एटा कहबी कि आपण जदी ड्रीम करूचंती जे कालिका दिन को आपण lakhs and lakhs rupees कमेबे you want to sit in a BMW in a Mercedes to have that comfortable life then you have to come out to the field to get there जदि आपण से जगह को पहुंचवा चाहते इट कैन नॉट हैपन लाइक दैट एंड मोस्ट ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स जोडा आज ए कंट्री कोन पूरा वर्ल्ड रे जदि म कहबी इट इज सेल्स सर एटा पिल्ला को केबे केबे मु बुझाय पे चेष्टा करे तापरे कहबे ठीक अछि मैम यू आर सेइंग सो विल take sales as a beginner we'll take it up we'll learn we'll develop certain set of skills which are in demand then we'll change the career but से बट ता कोन कहले सर से बट ता होची जदी मैम मो सेल्स रे जाउची मते जदी रॉयल एनफील्ड शोरूम रे रखिबे मु कर परबी सेल किंतु जदी मते गोटे कोन से हीरो होंडा की कोन माने ग्रेड कमिला माने मु कर परबे से चॉइस तो तांकर कि से कोठी रहबा चाहउ जंदी बट से रॉयल एनफील्ड रो शोरूम रे ताकू सेल करबा पई गोटे ऑडी रो शोरूम रे गोटे सेल्स पर्सन हेबा पई आपनकर योग्यता अछि की कोन आपन अछि प्रा स्टूडेंट से कि आमन एमबीए नहीं only MBA degree doesn't fetch you that only MBA degree doesn't fetch you that right so लोको एटा भी बुझु नांदी now why बड़ बड़ कॉलेजेस रो जो माने IIT IIMs रू पास आउट होचंती से मान को प्रेफरेंसेस रे बेसी दिया हुए because they have come from a competition they have come from a competition they have done that initial struggle to reach to that college correct right so nobody is talking about that we are talking about only MBA degree so it is not same so somewhere you need to take the pain अपन डिसाइड करंतु पेन केबे नेबार अछि फर्स्ट हाफ ऑफ योर करियर और ऑन द लेटर हाफ ऑफ द करियर कितला अपन का एनर्जी ड्रेन आउट जेइतबो एज बढ़ी जेइतबो सेते बेला अपन भाबुतबे नाही एबे मते किछि करियो पड़िबो बहुत लोक मान को तो मु एमिति भी देखाई छी जो माने इनिशियली कंफर्ट जोन रे रहंती किछि करंती नी ता परे देखंती तांको सांग माने बढ़ी जाइचंती से माने बड़ होई जाइचंती एंड देन दे से ना मते एमबीए करिया को पड़िबो कोटू डिस्टेंस रे करिया पड़िबो ओले हेई पारुनी हां है ना सो लेटर ऑन दे रियलाइज सो आई विल से टू ऑल स्टूडेंट struggle today take the pain today and live like a king for the rest of your life yes. Okay sir what is that one thing which separates an average salesperson and the today's salesperson in this today's competitive world okay now aji competitive world रे जेतेबले सोशल मीडिया रो इन्फ्लुएंस एते अछि लोको आपण देखंतु आगरु कोन गोटे सेल्स रो परसेप्शन एमती थिला कि हमको फील्ड को जाई कि किमा लोक मन को मीट करी ही पारे करे पड़तला राइट मोर भी मन अछि रुचि कंपनी सर एबे तो तार ओनर जे रिसेंटली से एक्सपायर करी गेले आई स्टिल रिमेंबर कि माने हम स्कूल रे पढुतुले से माने बैग रे सब लेडीज माने से मसाला वगैरह धर के घर घर बुली के कॉलोनीज माने करे सेल करथले आज सी रुचि वेरी स्टैंड्स वेरी ट्रू तो
एबे जेतेबेले सोशल मीडिया आउ डेटा सब बेले सब जगह को अवेलेबल हे गलानी एबे तो आम पई आउ इजी लोक मान को पाक पहुंचीबा पई हमर अप्रोच हमर स्टाइल हम चेंज करि परिबा सो what is that skill जदि आपण मते कहिबे माने एवरेज पर्सन और जो ऑलरेडी डूइंग वेल इन सेल्स it is about connecting with people how quick you can connect with people and how long you can connect that connection can stay. Sir, any tips you would like to give in terms of connecting with people or staying connected to people? You need to meet more people. Need to interact with more people. Okay. Because that is the only practice आपण book रे जिंस जानि परिबे नै the more you expose yourself, yes, the more qualities or the tactics you will. Very true. And always be in an acceptable position to learn from others. जदि आपण से जिंस नाही आपण भाबु चंती जे हम सब जिंस जानि एछि मु गोटे MBA कॉलेज टू पास आउट की I am into a very I am an MBA means I need white collar job, sir. No. You can learn many things from a pan wala also. True. That mentality has to be there. That yes. Always you should be open to learn. आमे देखिबा हमरो केते गुडा बिजनेसमैन माने एमिति अछंती जो माने हायर स्टडीज भी करि नांती सर बट स्टिल दे आर फ्लरिशिंग राइट सो से माने कोन पई बिकॉज़ तांको पाखरे से लर्निंग एटीट्यूड सब बेले थिला सो आई विल से जदि आपन सेल्स रो लाइन रे आपन एक्सेल करबा को चाहचंती बी अ गुड लिसनर interact with more people understand them know how to create the value of a product or whatever you are services you are providing ए जिंस को आपन को बुझिया को पड़िबो जानिबा को पड़िबो and this can be done only through practice. Okay sir, gotte sentence ru kuandu, why should today's young professional take sales as a serious career path? जदि मु स्टूडेंट मान को कथा कहबी one of the highest source of income जोटा आपन को दे परिबो high paid job it is sales. A part of salary, lot of perks are definitely, there, definitely other benefits. If you see in the industry those who are owning a BMW Mercedes it must be a sales guy. सर आउ टिके भलो से कहि दियंतु सेल्स रे कोन सो बेनिफिट्स थाय माने मॉनिटरी बेनिफिट छोड़ा अदर बेनिफिट जोटा कि पिला माने क्लैरिटी पाइले दे विल टेक इंटरेस्ट. See the first thing is you will be a world class leader. आजी जो माने कंपनी को लीड करबा पई चाहू चंदी जो माने खोजु चंदी गुटे ओनर टे गुटे लीडर को काहा को खोजिबो the person who has interacted with many people top to bottom right. who understands people psychology need people from every aspect. Absolutely. Not only ki to my profession only. So that leadership quality will develop from sales. Okay. So they must go for sales. I will say you don't be scared of sales. Sales is a very interesting topic. है ना? Understanding human psychology. Secondly, अपन को excellent communication माने communicator है जिबे. अपन को communication skills बहुत बढ़िया है जिबे. Not only with other माने in your profession only, अपन को personal relationships भी बहुत बढ़िया है जाए. Sir, आ गोटे जिंस पिला माने भाबंती माने beginning stage of their career रे कि माने मते sales रे बहुत झुकीबा को पड़ुछि. जोटा कि out of my personality. No. So say identity how can they shift? See, it is first starting with the psychology by changing the psychology of yourself, your mindset. Okay. निजर mindset टाको अपन change करंदु. It is not sales is not about forcing somebody to buy something. No, it is not. It is about माने तांकू तांकर बेनिफिट बतेबे जेते बेले से कन्विंस्ड हे जिबे तांकू लागबो जे ई जिंसटा मोर लाभ दबो तले से डेफिनेटली से जिंसटा को नेबो आपन कहबा को पड़िबो बट से पॉइंट ता जिबा जाय गोटे लोक सहित माने कांस्टेंट टच रे रहिबार अछि इन योर ओन वे in your own way तांकू फॉलो अप करंतु तांकू नै के बाय लूजिंग योर वे यू कैन बी इन योर ओन वे बट माने फ्रीक्वेंटली जणो सहित इंटरैक्ट करले से टैक्टिक्स ता आसी जिवो यस एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से हमरो टाइम रे तो हमरो टाइम माने हमें भी एते भी ओल्ड ही नो बट स्टिल आई विल टेल कि यंगर माने ओल्डर जनरेशन वी आर इन 30s सो स्टूडेंट्स आर इन 20s या तो तांकर जदी तांकू टिके पछको जदी जिबे एते लोक ए माइंडसेट आसु नथले जे निजर गोटे बिजनेस आरंभ करिवे एंटरप्रेन्योरशिप आरंभ करिवे किबा निजर किछ गोटे करिवे बिजनेस करिवे बट मोर एंड मोर स्टूडेंट्स आर द यंगर जनरेशंस आर मोर टुवर्ड इट जदी आपण आपनकर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को आरंभ करिवे चाहचंती I will tell you sales रो प्रोफेशन को अपन चूज करंतु you will be ready by that time कि अपन जेतल निजर बिजनेस खोलिबे it will work out. Okay, so the real example is sitting in front of all Mr. Sivashish Nanda जो पिला मनकर मित्र होचे कि मु इंजीनियरिंग करे छे. In fact sir has not done engineering into electronics or telecommunication, he has done BTech in biotechnology correct जोटा कि गोटे माने conventional path भी हां conventional path वे नु जोटा सर कहले पिला तो कोन मैकेनिकल कोन गोटे कर दउ छे कहउछंती कि मु करिबिनी बट सर गोटे कोर बायोटेक्नोलॉजी रो आसी कि फुनी एमबीए करे कि ता परे भी सेल्स रो करियर स्टार्ट करके आज लीडिंग द एंटायर
country. Thank you so much, ma'am. Okay, sir. With this, I have some of the rapid fire questions for you. So, are you ready? Yes, I'm ready. Please go ahead. So, let's begin. Yes. So, one word that describes sales. Connection. One skill every youth must learn today. I've already told about that. Adaptability. Okay. Your favorite sales book or mentor? The Art of Closing Sales by Brain Tracy. A very famous trainer, a very renowned trainer, and he has written one of the best books in sales. You can read that. Odia re bhi achi taro Hindi version bhi mili jibo. You can read that. I've learned a lot of things. A very foundational jinso mu bahut badhiya sikhi. Is there any particular person if you are following? Mentors? Yes. Well, I am not fond of big celebrities or like that. But definitely mu कहबी कि मोर लाइफ रे जहाँ सहित मोर managers माने मोर bosses माने जो माने थिले, I've learned a lot from them, and they have contributed a lot in my career. So I'm very thankful. This is this is the right platform where I can thank them. So I've got very good bosses. So it actually depends on you, because you were open to learn. That is why you got that kind of platform to learn. Very true. Yes. जोटा कि माने हमरो आजिरो जनरेशन रो यूथ माने they actually lack. Yes, you have to be acceptable position. You have to be in acceptable position. Yeah. So the biggest mistake young sales people make? Staying in comfort zone. Right. So cold calling or social selling? Today, if you ask me this question, then I will say definitely social, because the reachability is huge. Yeah. It's unlimited in fact. Yeah. Okay. So one habit that made you successful? It is about practice. The more you read, the more you learn, you interact with people, the more you will inherit those skills within you. So mote jodi apan pacharibe, then that is the true factor which has brought to me to this point. Even I do completely agree with your point, because movie mane till 2020 I was a different kind of person, but after 2020 amaro covid hela, tapre I became a mother, I took a career gap joda ki mu actually accept kari par nathli life re, but say time re ମୋର ଯେତେବେଳେ mental stability ଟା ମାନେ unstable ହେଇଥିଲା, so reading book was the only way out for me, जोड़ा कि transformation आनिला आज का date रे मो पाई. See, it has helped so many people. Yes. Like reading book कौन पाई particularly, I'm just taking a few more minutes about it. Please, the forum is yours. Actually, बहुत लोक अछंती जो माने तांकर एक्सपीरियंस को ये बहिर लिखि चंती, से माने ऑलरेडी से मिस्टेक्स को करि सारि चंती, किंबा से माने सॉल्यूशंस फाइंड आउट करि सारि चंती, and they have written it somewhere. And we should not wait for moments to make mistake and learn. Absolutely. Right. Before reaching to that situation, आपण से बही पढंतु, आपण जानि जानतु, you can solve it. So we have got only one life, so we should not waste it by making mistake, rather go through autobiographies, biographies. Very true. To save your time and learn more, adapt more, and be the best version of yourself. Correct. Okay, sir. A myth about sales you want to break forever? Sales is not about pressurizing somebody. Okay. No, it is wrong. It is about understanding the psychology of people. Okay. So if you मतलब जदि आपण सेहित मास्टरी पाई गले, then you can sell anything. Correct. You will always be in win-win situation. Absolutely. Okay. So your proudest moment in your sales journey? Oh. So though I have visited your social media, as you were talking about recently, your Facebook, LinkedIn, and YouTube. So you have many proudest moments actually. So from many, if you can share one proudest moment. There are yes, I will say that there had been many milestones where I felt very privileged and very proud कि मुझे भगवान मते से stage रे देई चंदी बोली. But there was one incident कि मु कोलकाता रे माने गोटे जगह ट्रेनिंग दोतली, and after training I was sitting inside a car. से माने मते कहतले कि आपण कार रे बसतांतु सर मु इवेंट को रैप अप करि आसीबो. So one guy came आ से मते कहले कि सर माने नॉक कले डोर को, मु जेतले विंडो तळ को गली, सो मते हैंडशेक कले, मते कहले कि सर मु आपण को बढिया बनिबा को चाहूची बोली. And the most surprising point was what that was initial stage of my career. ଆଉ ମୁଁ ବି बाकी स्टूडेंट्स मान को भलिया सेल्स को टिके भाबुतली नेगेटिव भाबुतली कि अरे यार एटा को प्रोफेशन नो पड़सी छि, एते प्रेशर एते सब जिंस. But that guy, he did not had a leg, amputated.
Okay. And he was telling me he wants to be like me. So I learned from मते सेते लागिला that माने को जगारो मते पहुंची देछि ए प्रोफेशन टा मते बोल करी, राइट? सो आई फेल्ट सो प्राउड. सो मते लागे कि जते बेले लोक माने मो पाई तांको करियर एक्सेल करचंती. So that has been always a proud moment for me. That's the biggest blessing. Yes. Also. Yes. सेल्स ऊपर बहुत किछि जानिबा परे गोटे क्वेश्चन माइंड को स्ट्राइक करूची. आजिकल जो जॉब स्कैरसिटी रहउची, जॉब रे ले ऑफ रहउची, as far as those criteria are concerned, how far a sales job is secured? तो आपण पचारे चाहउचंती जे लोक अक्सर भावंती जे सेल्स जॉब टा माने सब जल्दी पळे सर, टारगेट न कले पळेबो, इमिडिएटली पळेबो, बॉस सिक्योर फील करंती नहीं. ओके लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपण जदी देखिबे रियलिटी रे ताले सेल्स गुटे एमिति प्रोफेशन जोतरा सबुत्र अधिक अपॉर्चुनिटी अछि, राइट? आपण कोनसी माने वैकेंसी देखो. ट्रू. हां, इवन इररेस्पेक्टिव ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस. यस. सो अपॉर्चुनिटी इज ह्यूज, बहुत बेसी अछि. माने इवन सब अनएम्प्लॉयड लोक भी जदी अछन तांको भी ऑक्युपाई करि हबो जदी से माने जदी स्किल राइट रखुचंती. Okay. If they have that skill. Now talking about the reality of security, I will say a good salesman तारो irrespective of any other role सबुत्रु अधिका तार ही माने जॉब सिक्योर. राइट माने आपण कहउछन मेन पर्सन ता जेमति आमे ए पॉडकास्ट स्टार्ट होबा आगरु कथा होतिले कि गोटे मूवी रे आमे हीरो हीरोइन को देखु छु, किंतु हमर ए सेटअप टा करेओ केते टाइम लागि गला एडजस्ट करि के बसिबा, कथा आरंभ करबा, ट्रायल नबा. तो मु सेइथिरु मो माइंड रे आसिला ना कि ओडे मूवी टा को आमे देखि दोछु, बट तार बैक साइड रे भी केते लोको, केते टेक्नोलॉजी, केते टाइम, केते एफर्ट्स रोच, बट सेमन को तो हाइलाइट करे ही परुनी ना. सब बेले नेम फेम मनी सब किछि तो सेलिब्रिटीज माने नै जाउ छथि. मु आपन को जेमति कहली तार आंसर कि से मूवी रे शाहरुख खान इज द हाईएस्ट पेड पर्सन, राइट? एंड व्हाई? Because he is irreplaceable. Right. That is why. So many technicians can be replaced very easily. In fact, they would be in a queue always. Might be. Yes. है ना? But Shah Rukh Khan, Salman Khan, yeah, those who are frontliners, they are the people who are drawing the audience to the theaters. Correct. Sei through पैसा कमाउची मूवी और बाकी समस्त को पेमेंट होची. So a sales person is exactly like that. जदि sales person अपन गोटे excellent sales person, ताले अपन करो से कंपनी रे सबुत्रु सिक्योर जॉब. Because you are bringing the revenue. But sir, एमती भी तो हुए ना, माने let's say कि आपण 15 years गोटे ऑर्गेनाइजेशन को देई छंती, बट आपण को किछ गोटे 19-20 पाई का आपण को चाकरीटा माने एपट सेपट हे जिबार अछि. तो कंपनी नेवर लुक फॉर द एफर्ट्स व्हिच यू हैव बीन पुटिंग सिंस लास्ट 15 years, but for that one drawback or that one deadline, maximum probability is there for layoff. So yes. What would you say on this? Now it depends on the company what exactly they want. What exactly they want. मुटा तो जणो पई जनरलाइज कोइ परिबि नाही, है ना? So it depends. तापरे जदि आपण देखिबे देयर आर टू साइड ऑफ द कॉइन. जदि कंपनी ले ऑफ करूची ताहले गोटे भलो सेल्स पर्सन जारो वैल्यू लागुची कि मते एठी 40 लाख रो पैकेज मिलुची, जणे मते 1 कोटी देबा पे रेडी अछि, ताले कोन से भाबिबो कि मु कंटिन्यू करिवि एठी बोली करी? Within no time he will give his resignation and go away. Okay, so you mean to say in that case, you have to think professionally. Yes, you have to think professionally. You don't have to be emotional at that point. Okay. Now amaro kono रहिछि कि इंडिया रे specifically, you don't go to outside countries. इंडिया रे बहुत लोक माने लॉयल्टी रो ना रे बांधी ही रहबा बहुत चाहती. It is not like that. जदि हमको लागुछि आपन को वैल्यू दूसरा को जगह रे मिली परिबो, गो अवे. सेमती बड को बुक रे मु पढिथिली कि माने you should not have attachment towards the organization, rather you should have attachment with your work, because that is what you are going to deliver everywhere or wherever you go. Very true. Mr. APJ Abdul Kalam has quoted this proverb. So he told कि आपण निजर कंपनी को भलो पांतुनी, निजर कामो को भलो पांतु. तो कामो को भलो पाइबे माने वैल्यू क्रिएशन ultimately that will give you everything. Right. Now taking your example only, you are such a excellent trainer. आपण को एते students mane admire karanti, so somehow people will demand for your training, for your presence. तो सेति पई ही आपण आज मार्केट रे एग्जिस्ट करछन. And I am very blessed into these things, as I was just telling you कि मु जते बेले माने बोर प्रेगनेंसी परे मोडे करियर ब्रेक नेली, I could not accept that practically, because मते लागले ह गोटे छुआ हबो 6 मास परे टीवी रे हमें देखु ना करियर रिज्यूम करंती करि देबी, बट जे छुआटा ग्रो कला परे ताकू रखिया पई लोक दरकार कोन हबो ये वो से सब हे कि मु जो ब्रेकटा नेली सेही टाइम रे मु ट्रांसफॉर्म हेली. आउ एबे मु देखुची
माने मते फ्रीलांसिंग रो बहुत ऑप्शंस अछि माने बैक टू बैक मो पाखर ऑप्शंस अछि माने आई एम नॉट टेकिंग इट एज अ क्रेडिट टुवर्ड्स माय सेल्फ बट आई एम वेरी ब्लेस्ड टू द पीपल हु बिलीव इन माय कैपेसिटी कैपेबिलिटीज कि मो पाखर सब बेले पय काम अछि इट इज अप टू मी कि मु मोर सुइटेबिलिटी नै चूज करू छी हां एंड दिस हैज हैपेंड बिकॉज़ यू हैव took that pain in your initial career. Correct. You yes. went out of your comfort zone. Exactly. Okay. So last question for you is message to the youth of Odisha in one line. Well, for if you especially ask me this question for the Odia people, mane amar Odia कहबी ताले मु सब बेले कहबी do something for Odia community because आजिकली यूथ माने हमर स्पेसिफिकली ओडिसा रे गोटे परसेप्शन अछि कि हमर से कंकड़ा माने जेमती गोड़ो को गोड़ो किचड़ी बोली कहंती ना तो मु भी छुआ बेले सुनी आछि हमर ओडिसा रो मु भी सुनी छी मु सुनी नि मु देखि छी एक्सपीरियंस भी कर छी बट मु कहबी हमर जते भी स्टूडेंट्स माने अछंती जो माने ए पॉडकास्ट को सुनुचंती व्यूअर्स माने अछंती के भी नॉट ओनली स्टूडेंट एवरीबॉडी जदी आपण माने सुनुचंती एटा को मु कहबी do something for the Odia community, for your people, for your culture, for your soil, because this has given so much to you. It's payback time now. So do something for them and come out of your comfort zone. Because Odia culture रे बहुत लोग माने comfort zone रहता. That is the best advice you could ever give, even I could ever give. Come out of your comfort zone. Yes. Until you come out of that comfort zone, nothing is possible. Then after that, the world only is thing is possible when you be into your comfort zone. That is to blame others for everything. Maybe your parents, education system, people, everything. That is the only tendency you develop. Actually, comfort zone टा कौन हुए कि जो जिंस आमो ऊपर कंट्रोल ही नहीं, से जिंसों को हमें blame करिवा आरंभ करो. Right. So you need to break that. Yeah. Brain को rewire करिबाटा निहाती दरकार. गोटे पैटर्न ने ब्रेन रहिची ताकू जते rewire करि परबे सेते adaptability automatically बढ़ी जिवो. Very true. Right? Thank you for watching the podcast till the end. Doesn't matter whether you're listening the podcast from Cuttack or Bhubaneswar or Berhampur or any corner of this beautiful state Odisha. This podcast is absolutely meant for you if you're a youth who is aspiring for a beautiful career or a woman who is willing to restart the career, even people who are willing to feel empowered, get empowered, stay empowered with Udaan Academy. Thank you very much for watching the podcast. Namaskar. Namaskar. Thank you, ma'am.